ओके सो गाइज टाइम नाउ फॉर मी टू आंसर आपके सवाल जो आपने पूछे थे और मैं आपको दूंगा उन सभी के जवाब इन आर सेक्शन आस्क टीजी। Hey Technical Guruji, is it true that macOS and iOS don't have viruses, or should I be worried about getting an antivirus for my MacBook and iPhone? ओके सो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैक या iOS में वायरस नहीं आ सकता या कोई ऐसा मैलवेयर नहीं आ सकता। डेफिनेटली इवन दीज ओएसेस दे आर प्रोन फॉर लाइक दीज अटैक्स, बट द थिंग इज क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स इफ यू सी दे आर यूजिंग विंडोज या फिर दे आर यूजिंग द एंड्रॉइड फोन्स, सो जो नए ऐसे मैलवेयर्स या वायरसेस डेवलप किए जाते हैं द टारगेट इज ऑलवेज दैट मास, and the mass is always using Windows or Android phones. And considering the way the platforms are built, the way the iOS is or the way the Mac OS is, chances are rare कि वहां पे आपको कोई वायरस या malware अटैक फेस करना पड़े। That being said, you just need to be careful because अगर आप online हैं, if you are connecting your device to the internet, if you are using any external attachments or devices, storage devices, let's say अगर आप कहीं से data कुछ share कर रहे हैं, if you are getting emails with attachments, so आपको तो ध्यान रखना ही है because comparatively safe हैं, but completely safe हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। See, better option I'll give you, go with a nice sound bar because a sound bar will give you a great experience. आजकल तो काफी smart options भी आ गए हैं. They are quite sleek, won't take much space, no need of extra wiring and anything. Just need to keep it next to your television. Just one cable going between them और आप बड़े आराम से एक अच्छा experience ले पाएंगे if you go with a nice sound bar in that price range. Hi Technical Guruji, I am looking to buy a 55 to 65 inches 4K TV within rupees 60,000. Please suggest your pick. Okay. So if your budget is 60,000, market में बहुत सारे अच्छे options हैं. Let's say brands like Xiaomi और Redmi और OnePlus, आपको एक अच्छे options वाले TV अभी thankfully in the market मिल जाते हैं. So depending on which brand you prefer, because more or less जो televisions हैं performance is quite close, not really a difference, so you can't go wrong with any of these in that price bracket. तो आप देखो and whichever one you like in terms of let's say the looks or design, you can go with it. Right now I have an Apple Watch Series 8. Do you think it is worth upgrading it to Series 9? Not really, to be honest. आप अगर ऑलरेडी एक Apple Watch Series 8 को यूज करते हैं, so Series 9 में visually I would say there's like zero difference literally. Inside yeah we have the new S9 chip, हमारे पास में अभी वो डबल टैप वाला ऑप्शन Apple लेके आ गया है, तो मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं, but that being said Series 8 is still a fantastic tool, एक काफी अच्छी वॉच है. My honest advice would be you need to use your watch for at least 2-3 years before upgrading.